Hello everyone, very good evening to all of you. This is Anjali, your mentor for English, and I would like to welcome each one of you on our Testbook SuperCoaching class. So, where in today's session we are going to discuss our 2018 paper जो हुआ था जुलाई के मंथ में. So, you all are aware that since last week we have started discussing the UGC नेट का previous पेपर का question. Mostly जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट द लिटरेचर सेक्शन. यू ऑल आर अवेयर और कहीं ना कहीं वी गॉट एप्रीहेंडेड ऑल्सो जस्ट बाई लुकिंग एट द सिलेबस ऑफ द वेरी वास्ट वन. लिटरेचर जो है वो आपका अराउंड 2000 से भी ज़्यादा ऑथर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो येस, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. उसमें भी अगर आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ अगर नॉवेल उनके ऑथर ही सिर्फ याद करना पड़े, सो दैट इट सेल्फ इज़ अ कम्प्लीटली बिग टास्क. ओके, सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द प्रीवियस पेपर, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा है आपको बाउंड्री सेट करने के लिए, विच आई हैव रिपीटेड टाइम एंड अगेन इन आवर क्लासेस, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी बात की है. दैट ये एक बाउंड्री सेट अगर कर देगा तो यू नो कि दीज आर द पोर्शंस विच आई कैन स्किप फॉर द टाइम बीइंग. लेकिन ये वाले पोर्शन है जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकता हूँ, राइट. तो इसीलिए ये सेशन के जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखो, सारे के सारे अटेम्प्ट करो. On Saturdays also we do what we do the revision of the paper which we have done this whole week. ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा तुम्हें क्या करने का, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का. ठीक है, तो बिना किसी डीले के सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन जाने से पहले, if you people are looking for a more structured preparation, you people can join us in the Testbook SuperCoaching classes, जहाँ पर आपको मिलेगा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल वट एवर यू नीड फॉर योर UGC नेट प्रिपरेशन. सिर्फ वीडियो क्लासेस ही नहीं, आपको एक्सेस मिलता है 600-900 से भी ज़्यादा जो है ना लाइव क्लासेस आपके जो प्लेटफॉर्म पे हो रहे होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू बाई एनी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज हियर. यू विल बी गेटिंग एक्सेस ऑफ 800+ मॉक टेस्ट हियर. एंड हर क्लास के बाद जो स्टडी नोट्स मिल रही होंगी, दैट इटसेल्फ इज देयर. You can have the guidance of all the super teachers. As you can see, we have Mohammad Azam sir, we have Minakshi ma'am, Zenith Education, as well as Lakshya Academy. So in collaboration with our textbook, they are going to actually give you the right way, the right guidance. अब बात कर लेते हैं एक बार प्राइसिंग की. तो एज यू कैन सी फिलहाल जो प्राइसिंग चल रही है इस कोर्स की वो है 15,399. बट इज दिस द फाइनल प्राइस? नो, बिल्कुल नहीं. आपको ये कूपन कोड, दैट्स माई नेम ANJALI, जैसे ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं आपको मिलता है 35% का डिस्काउंट. यू कैन अवेल 35% डिस्काउंट हियर ऑन द प्राइसिंग ऑफ 15,399, जिससे के बाद जो है ना काफ़ी सिग्निफिकेंटली आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा. सो वंस यू हैव मेड अप योर माइंड, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. So let's start the session with the very first question on your screen, everybody. This is the first question. Go ahead, let me know what's your answer here. The question says, who among the following is the author of Account of Augustan Age in England 1759? तो ये जो आपका नॉवल है ये कब आया है? 1759 पे. सो हु वाज द ऑथर ऑफ दिस? जॉन गे, विलियम हैजलिट, ऑलिवर गोल्डस्मिथ और सैमुअल जॉनसन. हु वाज द ऑथर ऑफ दिस वन? आई थिंक यू विल गेट सम आइडिया फ्रॉम द ऑगस्टन एज. येस, 1759 से भी थोड़ा आइडिया मिल सकता है, दैट टू इन इंग्लैंड. Anyone, anything which you can think of? You can also eliminate some of the options जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकते हैं. Yes, go ahead, think and let me know. Let me take you towards the next slide, and here we are with option number 3, that is Oliver Goldsmith. So Oliver Goldsmith was the author of the Account of Augustan Age. आज के सेशन में you will be having more hold of such kind of questions जहाँ पे हमने author और बुक के ऊपर जो है ना ज़्यादा questions किए हुए हैं. Apart from that, you'll also have some subjective questions too. लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि ये था कब, राइट, व्हेन इट वाज रिलीज एंड व्हाट वाज इट्स सब्जेक्ट मैटर. सो ऑलिवर गोल्डस्मिथ वाज एन आयरिश नॉवेलिस्ट. ओके, सो ही वाज अ प्ले राइट एंड अ पोएट ऑल्सो,
who is best known for his novel The Vicar of Wakefield. Okay. His pastoral poem The Deserted Village and his plays The Good Natured Man and She Stoops to Conquer first performed in 1773. Oliver Goldsmith was an Irish novelist, playwright and poet who is best known for his novel. ठीक है अच्छा सो दैट पार्ट इज रिपीटेड हियर. सो ये हमने उनके फेमस वर्क्स के बारे में आपको बताया हुआ है. ठीक है अच्छा इसके अलावा आप यहाँ एक डिटेल वे में भी देख सकते हैं कि इनके जो बाकी नॉवेल्स थे, बाकी वर्क्स थी, वो कौन सी थी. ठीक है सो एज ऑफ नाउ याद रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वेंटिस published his novel Don Quixote. Don Quixote कितने पार्ट्स में ये रिलीज हुआ था? Anyone? Any answer? Very factual one. If you know it, you know it. Otherwise, this is a question जहाँ guess वैस नहीं चलेगा. 3 parts, 5 parts, 2 parts or 12 parts. सो ये एक स्पैनिश एपिक नॉवल थी, राइट? एक स्पैनिश नॉवल थी ये. इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स. कब एक 1605 और एक 1615. सो दिस वॉज द ईयर. ठीक है one was published in 1605, another was published in 1615, and again let me tell you it was a Spanish बुक. ठीक है याद रहेगा. चलिए थोड़ा कुछ और डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द इंजीनियस नोबलमैन सर क्विक्सॉट ऑफ ला मैंका. इसके बारे में कुछ और प्रोनाउंसिएशन के बारे में दिया हुआ है. ओके सो इज अ स्पैनिश नॉवल बाय मिगेल डी सर्वेंटिस, published in 2 volumes in 1605 and 1615. Don Quixote is considered the most influential work of literature from the Spanish Golden Age and the entire Spanish literary canon, as a founding work of modern Western literature and one of the earliest canonical novels. It regularly appears high on the list of greatest works of fiction ever published, such as Bokluban World Library collection that cites Don Quixote at author's choice for the best literary work ever written. मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ था, राइट? सो दिस यू पीपल कैन ऑल्सो रिमेंबर कि बॉकल्यूबन वर्ल्ड लाइब्रेरी कलेक्शंस ने इसे किस तरीके से साइट किया था बेस्ट लिटरेरी वर्क एवर रिटन के नाम से. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. एवरीबडी हैव अ लुक. Yes, everyone, the next question is there on your screen. Let me know क्या लग रहा है तुम्हें. Lytton Strachey's Eminent Victorians carries biographical sketches of writers and public figures. Identify the list below that correctly mentions those eminent Victorians. मतलब आपको वो लिस्ट चुननी है जहाँ पर फेमस विक्टोरियंस का हमने नाम लिख रखा है. Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon, A.E.W. Mason, Sir Arthur Quiller Couch, Matthew Arnold and Robert Bridges. Third option says E.F. Benson, Cardinal Manning, Lord Tennyson and Beatrice Webb, George Harding, General Gordon, Robert Browning and Mrs. Humphrey Ward. Let me give you the right answer that goes with option number 1 here. Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold and General Gordon. कम से कम मुझे लग रहा था कि at least you people can find out these 2 names here. ये I guess easy था figure out करना यहाँ से. So Florence Nightingale भी if you have identified that one name, it would have given you the right answer. Very good evening Asha ji. I hope you are doing absolutely well. So we are done with 3 questions here. Let's go for the next one. अच्छा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में.
Lytton Strachey was a member of Bloomsbury group who made his influence in the literary world of 20th century. He is best known for Eminent Victorians 1918, a biographical book with short sketches of the Victorian idols Cardinal Manning, Florence Nightingale, Thomas Arnold, and Charles Chinese Gordon, etc. In the book, he adopted an irreverent attitude to the past and especially to the monumental life and letters volumes of Victorians. He proposed to write lives with brevity, which excludes everything that is redundant and nothing that is significant. He also wrote Queen Victoria 1921, Elizabeth, and Essex 1928, and Portraits in Miniature in 1931. He published critical writings, especially on French literature, but his greatest achievement was in biography. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. ओके, हैव अ लुक एवरीबडी. क्या होगा यहाँ पे? One of the following statements about the eponymous saint of Dryden's song for Saint Cecilia's Day is incorrect. Identify that statement. गलत स्टेटमेंट आपको चुननी है स्टूडेंट्स, मतलब जो इनकरेक्ट है. किसके बारे में? अबाउट द एपोनिमस सेंट ऑफ ड्राइडेंस सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे. So Saint Cecilia was a Roman lady and early Christian martyr. Saint Cecilia was an Armenian devotee of the Christian faith. Saint Cecilia's festival is celebrated on 22nd November in England. Or Saint Cecilia was a patroness of music who was fabled to have invented the organ. So which one is wrong? आपको incorrect वाला option चुनना था. So Saint Cecilian was an Armenian devotee of the Christian faith. ठीक है, याद रहेगा. Next question on your screen, you can give it a try. क्या होगा यहाँ पे? Which of the statements on Michael Roberts' Faber book of modern verse is not true? Again, incorrect वाला statement आपको चुनना है. Which one seems incorrect here, students? पूरा पढ़ लो, मुझे बताओ क्या लग रहा है. So which one seems incorrect here? कौन सा false लग रहा है आपको? Okay, so we'll talk about the options now. His anthology canonized modern poetry and poets for quite some decades. The collection begins with the poems of Robert Bridges. Roberts omitted the Georgian poets in his anthology. Yeats, Eliot, and Pound find a place in the Faber book of 1936. So it was option number 2. The collection begins with poems of Robert Bridges. No. The next question is there on your screen. Who among the following proposed that the first Gulf War had never take place? It was simply a hyper real media generated spectacle. मतलब किसका मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बस ये मतलब समझो कि मीडिया का एक नया कहानी था जो लोगों के सामने आया. सो हु प्रपोज्ड दिस? Yes, anyone? Any idea?
So we should go for which option? Richard Rorty, Jean Francois Lyotard, Jane Baudrillard, or Umberto Eco. So it was option number 3, Jane Baudrillard. सो उन्होंने ही ये प्रपोज किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. ओके, सो व्हाट ही थॉट, एवरीबडी क्या लिखा हुआ है ज़रा एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं. तो इट वाज जीन बॉडिलार्ड. उन्होंने सोचा दैट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वॉर. Rather, despite containing the material features of one, it was at once real and a simulation. The Baudrillard's logic is that the term war was used to legitimize a performance, and it is critical to apply his logic to war on terror. मतलब उनका जो प्रॉब्लम था, या समझिए कि उनका जो थ्योरी था वो इस शब्द से था. Okay, that we should not use that word for that whole incident. Critics of Baudrillard's 1991 book, The Gulf War Did Not Take Place. This was the name of book. Okay, so the Gulf War did not take place. Often note the provocative title. Obviously, a war took place, and the title is not meant to be taken literally. Baudrillard is subverting the logic of Desert Storm through black humor and parody, with particular consideration to the argument that a smart war was being waged through technologically precise bombings and missile attacks. He saw a complete break in the reality of the conflict as it was actually taking place and the narrative power of its media presence. So obviously ये नाम जो था वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला या ज़्यादा प्रोवोकेटिव था, राइट? Everybody would be intrigued that why the name of book suggest like this कि भाई सबको पता है कि वॉर तो हुआ था, why this name is coming as the Gulf War did not take place. So that intriguing factor की वजह से भी जो है ना हमारे ऑथर ने ये काम किया. उन्होंने ब्लैक ह्यूमर और पैरोडी का इस्तेमाल करके ही एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन दैट होल इंसिडेंट. ओके, चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी. So the next question here suggests Sir Thomas Browne's urn burial was prompted by So it was prompted by the discovery of ancient burial urns near Norwich, the contemporary researches on burial rites in Norway, the death of Saint Francis of Assisi and his burial, the publication of the English Book of Common Prayer. Okay, so my answer is going with which option here? Okay, so let me take you towards the answer. It goes with option number 1. So Sir Thomas Browne's urn burial was prompted by the discovery of ancient burial urns near Norway. Hydriotaphia urn burial. So that's the urn burial जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. Okay, again let me tell you, hydriotaphia or a discourse of sepulchral urns lately found in Norfolk is a work by Sir Thomas Browne, published in 1658 as the first part of a two-part work. So it was released in two parts that concludes with the Garden of Cyrus. So that was the name of the second book जिससे ये इसकी part जो है ना वो close हुई. Its nominal subject was the discovery of a Roman urn burial in Norfolk. The discovery of these remains prompts Browne to deliver first
a description of the antiquities found, and then a survey of most of the burial and funerary customs, ancient and current, of whom which his era was aware. The most famous part of the work was the apotheosis of the fifth chapter, where Brownie acclaims. उन्होंने क्या claim किया? But man is a noble animal, splendid in ashes and pompous in the grave, solemnizing nativities and deaths with equal lustre, nor omitting the ceremonies of bravery. In the infamy of his nature. So life is a pure flame, and we live by an invisible sun within us. Okay? So he has just given his view about this whole part, and that was being stated here in the last 4 lines. Everybody, these are the 4 lines from where you can understand the point of view of Sir Thomas Browne. Next question on your screen, everybody. Yes. Identify from among the following list those cannot be called war fiction. जिसको war fiction नहीं बोलना चाहिए वो कौन है? A modern instance, Catch-22, The Age of Innocence, and The Naked and the Dead. So कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे सही जा रहा है? इसमें से कौन सा है जिसे वॉर फिक्शन हमें नहीं बुलाना चाहिए? So the right answer is going with option number 3rd, A and C. A and C. A modern instance, and The Age of इनोसेंस, ये दोनों हमारे जा रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एवरीबडी. Okay, the question says, who among the following writers was not one identified with the movement of 1950s England. मतलब किसे उस समय नहीं पहचाना गया था 1950s का जो ये मूवमेंट हुआ था इंग्लैंड में, who was not identified at that time. Roy Fuller, Kingsley Amis, Philip Larkin and Donald Davy. Let me take you towards the next slide, and that says Roy Fuller. So Roy Fuller was the one who was not identified at that time. तो ये मूवमेंट जो हुआ था, ये जो मूवमेंट का जो टर्म आया था वो कब हमने क्वाइन किया था? 1954 में क्वाइन किया था. By whom? By J.D. Scott. Okay. So who was he? Who was J.D. Scott? J.D. Scott was the literary editor of The Spectator to describe a group of writers including जैसे कि Philip Larkin, Kingsley Amis, Donald Davy, D.J. Enright, John Wayne, Elizabeth Jennings, Tom Gunn and Robert Conquest. So these were the writers जो उस समय उभर कर आए थे. So the movement was essentially English in character, as poets from the other parts of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland were not involved. मतलब बेसिकली जाहिर सी बात है, जब हम इंग्लैंड के ही राइटर्स को वहाँ पर ले रहे हैं तो इस पूरा का पूरा जो मूवमेंट था ना वो इंग्लिश में ही था, बिकॉज अदर पार्ट्स ऑफ यूएस वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. ठीक है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के या नॉर्दर्न आयरलैंड के पोइट्स को, राइटर्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था.
Next question on your screen, everybody. Go ahead. Which of the following novels does not belong to Nuruddin Farah's Blood in the Sun trilogy? So नॉट्स दिस वॉज द नॉवल जो नूरुद्दीन फारा के ट्रिलॉजी में बिलोंग नहीं करता है. ओके, सो नूरुद्दीन फारा is a Somali novelist. He also wrote plays for both stage and radio. ठीक है, दोनों ही जगह के लिए plays लिखते थे, even short stories और essays भी लिखते थे. So when he was leaving Somalia in 1970s, he has lived and taught in numerous countries जैसे कि United States, England, Germany, Italy, Sweden, Sudan, Uganda, South Africa, etc. Even in India. So this whole trilogy includes, अच्छा trilogy मतलब तो समझते हैं ना, which is a collection of three books together. So Blood in the Sun trilogy 1986 में Maps London, 1993 में Gifts London and 1998 में Secrets New York. So that was the name of all three books in this trilogy. Next question seems a bit lengthy. Everybody please be patient and read all the options. Even though you feel कि option number 1 या 2 मुझे सही लग रहा है, but still read each and every option here and then only mark your answer. आपको बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्टली मैच किया हुआ है, मतलब पोएट का उनके पोयम के साथ.
Okay, so any answer yet which seems correct here? कौन सा वाला सही मैच किया हुआ है? So the answer is going with option number 4. I think एक तो सब लोगों ने पहचान ही लिया होगा, बर्ड वॉचर बाई रामानुजन. ठीक है, ये तो करेक्ट था. एजिकिल ने लिखा था पोएट लवर. ठीक है. देन वी हैव स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस बाई दत्त. आवर कैजुआराना ट्री बाई महापात्रा. सनसेट एट पूरी. ठीक है, तो दैट वाज आवर करेक्ट आंसर. एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी. विच वन इज देयर ऑन योर स्क्रीन? आपको बताना ये है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है. आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शन विच इज गिवन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फर्डिनांड दे सोजोरेज seminal distinction between Lang and Parole. Lang and Parole. So go ahead. So the next question ka answer is going with option number 1. Parole is the particular language system, the elements of which we learn as children and which is codified in our grammars and dictionaries, whereas lang is the language occasion. What A says to B, मतलब इसने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, that was included in lang. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है. ऐसा अभी तक हम लोगों ने करीब 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, वेयर वी हैव टू मैच द इधर आपको ऑथर या उनके वर्क के साथ मैच करना पड़ता है, पोएट या पोएम रहते हैं, फिर आपको नॉवल और उनके कैरेक्टर्स के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है. तो मोर और लेस यही 3 पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका मैच द कॉलम के सेक्शन से. ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरीबडी. क्या लग रहा है? Arthur Seaton, Marlene, Anna Wolf and Beckwith. Top Girls, The Golden Notebook, The Swimming Pool Library, Saturday Night and Sunday Morning. So these are the names of the novels. किसमें कौन सा कैरेक्टर था, बस आपको यही मैच करना है.
Okay, so let me take you towards the right answer here. That goes with option number 2. यानी कि we have A for 4, यानी कि Arthur Seaton is going for Saturday night and Sunday morning. For B we are going with 1, यानी Marlene was in Top Girls. With C we are going 2, Anna Wolf in yes, the Golden Notebook. And for D we are going as 3rd, यानी कि Beckwith with the Swimming Pool Library. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये जरा देखिए क्या लिखा हुआ है. द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ अ नॉवल इज गिवन बिलो. आइडेंटिफाई दी नॉवल. आपको एक पैसेज दिया गया है, बस आपको वो नॉवल आइडेंटिफाई करना है वो पैसेज पढ़ करके कि विच नॉवल, फ्रॉम विच नॉवल दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन. Welcome, O life. I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. April 27. Old father, old artificer, stand me now and ever in good state. So it was from To the Lighthouse, a portrait of the artist as a young man, Morris या Almayer's Folly. So the answer is going with option number 2, A Portrait of the Artist as a Young Man. So it was the first novel by Irish writer James Joyce. Kunstler Roman is in a modernist style. It traces the religious and intellectual awakening of the young Stephen Daedalus, a fictional alter ego of Joyce and an allusion to Daedalus, the consummate craftsman of the Greek mythology. Stephen questions and rebels against the Catholic and Irish conventions under which he has grown. तो एक तरीके से alter ego बोल दिया गया, तो you now understand कि the story has got the personal touch, culminating in his self-exile from Ireland to Europe. The work uses technology that Joyce developed more fully in Ulysses and Finnegan's Wake, which was there in 1939. So we'll keep the session till here itself, everybody, and I hope the questions, I guess around we solved 16 questions in today's session. So this was all from your July 2018 paper. तो द नेक्स्ट सेशन विल बी अगेन ऑन द सेम पेपर. अभी हम लोग इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे एक और सेशन में, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेपर. ठीक है, तो आई होप ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर इन द सेशन. मार्क योर अटेंडेंस जस्ट बाय हिटिंग द लाइक बटन, एंड विल अगेन मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक ध्यान रखो. बाय बाय, टेक केयर, एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग.